तुम ग्लूकोज प्लस वाटर, तीन मॉलिक्यूल ग्लूकोज वाटर एंड लैक्टोज जोटा हम लास्ट टाइम देखले लैक्टोज रे कोन थिबो, लैक्टोज रे थिबो ग्लूकोज प्लस गैलाक्टोज ता होय तमर कोन गैलाक्टोज हम देखले ना इन कंबाइंड स्टेट। ठीक अछि, जेतेबेले भी तुमर डाइसैकेराइड को ब्रेक करियो मन रखियो सबले डाइसैकेराइड विल ब्रोकन इनटू मोनोसैकेराइड्स फर्स्ट, तापरे जो थर्ड फॉर्म हैला दैट इज योर पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड माने कोन कहूची, पॉली माने हम बुझछन कि मोर देन 2, तो मेनी यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स व्हेन ओके ओके, तो तले हमें पॉलीसैकेराइड कथा होचंदी, पॉलीसैकेराइड कोन होबो मोर देन 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड जेतल जॉइन करिवे दैट विल फॉर्म योर पॉलीसैकेराइड्स। एग्जांपल कोन स्टार्च, ग्लाइकोजेन एंड डाइटरी फाइबर। मन रखियो पॉलीसैकेराइड को ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट। तुम देखिथियो ओके गाई आओ दे कैन ईट लीव्स, पत्र सान खाई हजम कर दोचंदी, बट ह्यूमन जदि पत्र खाइबो ताको हजम कर परिबो बिकॉज़ ताकू डाइजेस्ट करिया पे जहा एंजाइम्स दरकार जहा बैक्टीरिया दरकार दैट इज नॉट प्रेजेंट इन आवर स्टमक। तो पॉलीसैकेराइड ह्यूमन जो जहा भी कंजम्पशन करे दैट इज नॉट यूज्ड, ओके दैट इज नॉट यूज्ड फॉर योर नरिशमेंट, सेट नरिशमेंट पे यूज होनी, दैट इज यूज फॉर डिफरेंट अदर पर्पसेस। जेमति आमे कहउछन डाइटरी फाइबर कोन इट विल प्रोवाइड बॉल टू द स्टूल, इट विल हेल्प इन बाउल मूवमेंट। ठीक अछि, आमे कोन कॉन्स्टिपेशन हो जाउची, जेतल कॉन्स्टिपेशन थिबो जदि से लोक को आमे अधिक अमाउंट रो फाइबर दबा, से फाइबर टा कोन करियो हेल्प टू प्रोवाइड बॉल टू द स्टूल, स्टूल रे बॉल कासिबो आउ इट विल हेल्प द मूवमेंट ऑफ बाउल मूवमेंट को इजी करेबो एंड कॉन्स्टिपेशन को भी कम करे देबो, राइट। सो whether this starch whether this dietary fiber these are not is the human body, এটা মনে রাখিও সবলে। starch is composed of several hundred of glucose units in complex form। ঠিক আছে, complex form রে যেতলে থিবে 100 of unit जोटा कि ह्यूमन ताकू ब्रोक डाउन करि परिबनी। these these polysaccharides are present in some quantity millet रे किछि थाई, cereals रे, roots रे and tubers रे, जो थे तुम रफेज अच्छी रफेज जोटा आम कहते फाइबर्स कहते डाइटरी फाइबर नॉट दैट ओके जोटा आम डाइटरी फाइबर रे जो थे भी फूड रे प्रेजेंट थी दैट इज कॉल्ड एज योर पॉलीसैकेराइड्स। कोथरे डाइटरी फाइबर अच्छी, मिलेट रे अच्छी, सेरियल्स अच्छी, सेरियल्स लाइक व्हीट हेगला तुम राइस हेगला कम क्वांटिटी अच्छी बट दैट इज प्रेजेंट। देन रूट्स हेगला आउ ट्यूबर्स लाइक योर पोटैटो एंड ऑल जोटा माटी तले होची ना स्वीट पोटैटो हेगला स्वीट पोटैटो हेगला ए सब। ओके, एतिक जिनस होला तमरो कोन मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड आउ डाइसैकेराइड, एतिक जिनस मन रखियो। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, ग्लाइकोजन इज ए फॉर्म। ओके देखो आमे तले अधिक मात्रा रे कार्बोहाइड्रेट नबा, जेतरा हमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा नबा, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट कोन पे यूज होची, कार्बोहाइड्रेट यूज करा जाए मेनली फॉर एनर्जी। तुम देखिथियो तले क्रिकेटर माने क्रिकेट खेलंदी इन आईपीएल वगैरह रे दे यूज टू ईट बनाना। ठीक है, बनाना खाते ना से बनाना हो गला एथरे कोन होबो फास्ट एनर्जी। किंतु किमा जेतले स्कूल रे कंपटीशन हुए, रनिंग कंपटीशन हो गला जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत हुए, रनिंग कंपटीशन हो गला, फुटबॉल मैच हो गला, सेथरे कोन करंती टीचर्स विल प्रोवाइड अस ग्लूकोज। ग्लूकोज कोन, ग्लूकोज इज सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जेतले तमे ग्लूकोज को माने इनटेक करिवो संगे संगे तादरो एनर्जी रिलीज होवा स्टार्ट होबो। ओके, जेतले अधिक एनर्जी हे जिवो कोन होबो, जेतले तम पाखरे अधिक एनर्जी हे गला, ओके सेही एनर्जी विल बी स्टोर्ड, सेही एनर्जी सेही कार्बोहाइड्रेट कोन होबो सेटा सेटा बॉडी रे स्टोर होबो इन द फॉर्म ऑफ फैट। ठीक अछि, सेही बॉडी रे इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होबो। तो ग्लाइकोजन कोन कहूची, इट रिजॉल्व कार्बोहाइड्रेट इन मसल्स एंड लिवर्स। ग्लाइकोजन फॉर्म रे
एटा हला तमरो कोन ग्लाइकोजन आमे कोन पढिथिले ग्लाइकोजन इज ए सैकराइड तो ग्लाइकोजन फॉर्म रे कार्बोहाइड्रेट हमर मसल्स रे आ लिवर रे स्टोर हो जेतले एनर्जी रिक्वायरमेंट हो सेतिर मसल रु आ लिवर रु बाहरी बट द क्वांटिटी इज वेरी लेस देखो मसल रे ओनली 0.3 to 1% माने लेस देन 1% sorry less than 1% of energy is being stored in muscle और liver रे 3 to 7% of energy is being stored it is formed by condensation of large number of glucose molecules जो मोनोसैकेराइड थिला जेतले बहुत सारा अधिक नंबर हे जिवे सेटा कंडेंस्ड फॉर्म होला परे it will become glycogen okay just एटा आज तो किसी रिलेटेड नहीं just it is a note किछि किछि तुमको कॉम्प्लेक्सिटी आसी पारे सेति में बुझाया पे गोटे गोटे लाइन में लिखा है जेमति कि डाइटरी फाइबर कोन आर सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज जोथरे कि बहुत सारा मोनोसैकेराइड्स आर कंबाइंड इन टर्म्स ऑफ 100 200 एमती फॉर्म में जोटा कि ह्यूमन बॉडी कैन नॉट ब्रेक दैट सेलुलोज कोन इट इज ए पॉलीसैकेराइड मेड ऑफ ग्लूकोज इनसॉल्युबल माने कोन इनसॉल्युबल माने जोटा पानी रे आमे ताकू चाहिले भी माने मिलै परिबन ताकू इनडाइजेस्टेबल डाइजेस्ट ऑब्वियसली करिवनी मु कहलिना तादर हम किछि न्यूट्रिशन मिलिवनी कि हम बॉडी ताकू ब्रेक डाउन भी करि परिबनी indigestible form of carbohydrate provide bulk and diet and help in bowel movement ठीक अछि एटा नोट्स थिला जस्ट यू जस्ट गो थ्रू इट these are the examples of carbohydrate एट देखो तुमको अछि एठी होला cereals हे गला एठी तमरो दाल हे गला एठी कॉर्न हे गला पीज हे गला चेरीज बनाना पोटैटो ब्रेड्स ए सब जिंस पास्ता ए सबुथु हमको कोन मिलछि कार्बोहाइड्रेट मिलछि ए सबुथु हमको कार्बोहाइड्रेट मिलछि नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रो स्पेसिफिकली बॉडीज रे तार फंक्शन कोन फर्स्ट फंक्शन कोन इट्स प्रोवाइड एनर्जी प्रथम फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट सप्लाई एनर्जी हाउ इट होछि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यदि हम बॉडी रे कार्बोहाइड्रेट रो एनफ अमाउंट रो एनर्जी मिलिबनी देन बॉडी विल लुक फॉर फैट और प्रोटीन जेतले कार्बोहाइड्रेट तुम कम खाइछो प्रोटीन हमर कोन पे यूज है प्रोटीन यूज है फॉर अदर पर्पसेस लाइक मेंटेनेंस ऑफ सेल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम ए सब काम पे प्रोटीन यूज है यदि आमे कम अमाउंट रो कार्बोहाइड्रेट खाइदिबा ताले बॉडीज को जति की एनर्जी दरकार आमे काली भी कथा हितले ऑलमोस्ट 2100 फॉर ए मेल and 1700 for female एतिकी अमाउंट रो मिनिमम एनर्जी तो बॉडी को दरकार ना फॉर परफॉर्मिंग द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज लाइक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पे हे गला किंबा तमरो लंग्स रो जो हम निश्वास प्रश्वास नोचन ता पे हे गला तो हमको एतिका अमाउंट एनर्जी तो दरकार यदि एतिका अमाउंट एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट न मिलिबो ताहले द protein or the fat molecule will be broken down to provide energy first मन रखियो supply energy केते energy दोउची 1 gram provide 4 kilocalorie of energy गोटे ग्राम रे हमको 4 kilocalorie of energy मिलची यदि हम 100 ग्राम रो राइस खाइबा ताले केते मिलिबो हमको almost 400 kilocalorie ठीक अछि मन रखियो गोटे किलोग्राम रे हमको 4 kilocalorie of energy is provided by the carbohydrate second वाला प्रोटेक्टिव एंड डिटॉक्सिफाइंग एक्शन ऑन लिवर बॉडी को से प्रोटेक्ट करिवो आउ लिवर रो डिटॉक्सिफाई करिवो लिवर रे कोन हुए लिवर कंटीन्यूअसली हमर बॉडी को माने जहा भी हमें खाउचंदी पिउचंदी ओके लिवर ताको कोन करची एक्सट्रैक्ट करची टॉक्सिक को तो से जो प्रोसेस अछि टॉक्सिक को एलिमिनेट करिया प्रोसेस रे धीरे धीरे से भी माने टॉक्सिफाई हो जाए तो ताको डिटॉक्सिफाई करिया पे वी नीड कार्बन सॉरी वी नीड कार्बोहाइड्रेट लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करे हार्ट मस्कुलर एक्टिविटीज ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन हार्ट आर यूज्ड इन इमरजेंसी हम देखिथिले एटी ऊपर हम पढिथिले कि किछि अमाउंट रो एनर्जी हमर कोड स्टोर होची स्टोर्ड इन लिवर जेतले हमर इमरजेंसी सिचुएशन होबो सेतले हमें एनर्जी नै परिबा बट द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एटा मन रखियो सब बेले एनर्जी ग्लाइकोजन फॉर्म रे बॉडी रे स्टोर हेकी थाए नेक्स्ट एसेंशियल फॉर नर्वस टिश्यू टू फंक्शन प्रॉपर्ली
नर्व टिश्यू जो अच्छी बॉडी रे हमरो जहाँ भी सेंसेस वगैरह हैला सब गुडा हमरो ब्रेन सहित कनेक्टेड होइछंदी तो नर्व टिश्यू से नर्व टिश्यू को फंक्शन करिया पई हमकु एनफ अमाउंट रो कार्बोहाइड्रेट दरकार प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन मु कोन कहली यदि कार्बन यदि हमें कार्बोहाइड्रेट और कार्ब्स यदि सफिशिएंट अमाउंट रो हमें न नैथिबा then the protein that is available in our body will be broken down यदि broken down हे गला एनर्जी तो मिल जिवो बट प्रोटीन जोथ पई तयारी हेतिला और द प्रोटीन रो प्राइमरी फंक्शन लाइक द टिश्यू रिपेयर लाइक फाइटिंग द डिजीज ए सब जिंस प्रोटीन करि परिबनी तो यदि हमें कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट और एडेक्वेट अमाउंट नबा दैट विल स्पेयर द प्रोटीन प्रोटीन को ता काम करिया को एनफ चांसेस मिलिबो हमको प्रोटीन को भांगी की एनर्जी पे यूज करिया पड़िबन दैट इज नोन एज प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें पढ़िबा जेतल प्रोटीन पढ़िबा टू टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड अछि सम आर एसेंशियल सम आर नॉन एसेंशियल तो जोटा एसेंशियल अमीनो एसिड सेटा हम बॉडी रे एक्चुअली प्रोडक्शन हुएनी तो सेटा को हमें फूड द्वारा नबा पड़े एंड सम अमीनो एसिड्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी हम बॉडी किछि अमाउंट रे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को प्रोडक्शन करि पारे एंड तार सिंथेसिस पई तार प्रोडक्शन पई हमकु एनफ अमाउंट रो कार्बोहाइड्रेट दरकार देन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को ऑक्सीडाइज करिया पई हमकु कार्बोहाइड्रेट दरकार देन इट प्रोवाइड्स फ्लेवर एंड वेराइटी टेस्ट आसु जो टेस्ट बोर्ड को जोटा जणा पड़ची दैट इज योर फ्लेवर और वेराइटी हमर आसीबो बाय अप्लाइंग कार्बोहाइड्रेट इन डिफरेंट फॉर्म देन रिटेन वाटर कोठी कोलन एरिया हमरो स्टोमक रो लार्ज इंटेस्टाइन रो कोलन एरिया रे वाटर को रिटेन कर रखे वाटर रिटेन कर रखिले ही तमर कोन होबो डाइजेस्टिव प्रोसेस इजी होबो एंड ऐड बल्क्स टू डाइट जेन हम कहले कि फाइबर किछ अमाउंट रो अछि तो सेउडा कोन हो जोटा फाइबर अछि दैट इज नॉन डाइजेस्टेबल भी नुहो इनसॉल्युबल भी नुहो तो सेटा तो बॉडी माने इंटेस्टाइन रहिबो एंड दैट विल प्रोवाइड बल्क्स टू डाइट एते जिंस मन रखिबो कौन कौन कहली फास्ट कहली तुमको सप्लाई ऑफ एनर्जी देखो एग्जाम रे तुमको सब जिंस लिखिया पे केबे स्कोप नथिबो जदि से कार्बोहाइड्रेट पचाले ताहाले भी तुमको एते सब जिंस लिखिया पे स्कोप नथिबो तमे ताकू शॉर्ट रे लिखियो केमति लिखियो तमे गोटे एमती सर्कल बनेइबो एट लिखियो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ठीक गोटे गोटे पॉइंट को लिखियो सप्लाई एनर्जी 1 ग्राम इक्वल टू 4 किलो कैलोरी प्रोटेक्टिव एक्शन ठीक तापरे प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन तापरे ला सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स फ्लेवर एंड वेराइटी रिटेन्स वाटर एमिति को लिखिले तुम कोन हो 2 मिनिट्स भीतर सब फंक्शन को तुम लिख सकथिबो नहले जदि तमे ताकू पॉइंट बाय पॉइंट कर लिखिबो देन इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट एंटायर आंसर इन द गिवन टाइम सबल मन रखिबो तुमको एबे टू डेवलप करे पड़िबो तो प्रोसेस तुमको जोड़ा शूट करिवो नॉट ओनली कि तमे एमिति माने मु जेमति कल सर्कल करी तुमको जदि किछि अलगा फॉर्म भी आछि यू कैन यूज दैट किछि असुविधा नै बट देखिबो कि मैक्सिमम पॉइंट कम टाइम में तुम के लिख परछो जेन मु कहूची पूरा वर्ड तुमको लिखिया माने पूरा सेंटेंस लिखिया दरकार नै सेन बुझी परिबे मु लिखिला सप्लाई एनर्जी 1 ग्राम इक्वल टू 4 किलो कैलोरी दे अंडरस्टैंड कि एटा में कार्बोहाइड्रेट विषय रे ही कहउचंती ए सब जिंस टिके टिके मन रखिबो प्रैक्टिस करिवो विल टेक द एग्जाम्स जेतला हमर गोटे गोटे जेमती 3टा लेखा चैप्टर सरिवो विल टेक एग्जाम्स सो सेतबेला हमें देखिबा कोटा मन रहउची कोटा मन रहउनी केमती हम ताको मन रखिया फाइन नेक्स्ट हला कोन एग्जांपल कहली एटी हम एग्जांपल दैचंती कोन कोन एग्जांपल हे परिवो एग्जांपल्स लाइक cereals ये देखले ना cereal एटा then millets this one then sugar simple sugar एटा simple sugar हे परिवो jaggery गुड़ and honey ठीक अछि then roots and tubers कोन कोटा आछो तुमरो जोटा माटी तळे जहा भी तुमरो पडुची लाइक योर पोटैटो then pulses then dried fruits पूरा ड्राई फ्रूट्स हमें कहउचंदी तादरे भी किछि अमाउंट रो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट थाए
देन कम टू रिक्वायरमेंट, इट इज इंपोर्टेंट आमे केमिति जानिबा केते अमाउंट रो कार्बोहाइड्रेट हमको कंज्यूम करियार अछि सेटा हमको के जणेबो आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जेतेबेले तमे रिक्वायरमेंट लिखिबो प्रथम फंक्शन मन रखिबो यू हैव टू राइट द रिक्वायरमेंट एज पर द आईसीएमआर कोन कहली आईसीएमआर कोन इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर रो गाइडलाइन अनुसार हमको लिखिया पड़ो रिक्वायरमेंट तो कार्बोहाइड्रेट as per the ICMR guideline we should take almost 55 to 65% of total energy from carbohydrate आमे 55 नै कि 65% पर्यंत एनर्जी हमर जति रिक्वायरमेंट अछि इट शुड बी टेकन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट 55 नु 65 सो लेट्स वी टेक इट एज 60% आमे कैलकुलेट करिया बर्तन सो considering the total energy requirement of an adult male आमे देखले मेल लो केते कहितले आमे अराउंड 2100 किलो कैलोरी गोटे अर्बन मेल अर्बन जे रहउची अर्बन रहउची माने जे फिजिकल एक्टिविटी बहुत अधिक करूनी बिकॉज जते हम रूरल को आसीबा जो माने फिजिकल एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व अछंती किबा अर्बन एरिया रे भी जो माने फिजिकल एक्टिविटी अधिक करछंती तांकर एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी हायर देन दिस तांकर 3000 3500 पर्यंत पळेबो बिकॉज दे आर स्पेंडिंग मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन फिजिकल एक्टिविटी तो ये जो 2100 को हाउची इट इज फॉर लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज तो 2100 किलो कैलोरी रो हमको 60% नवाक पड़िबो फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट तो कैलकुलेट करो 2100 into 60 by 100 to calculate the 60% केते आसला 1266 किलो कैलोरी हमको दरकार 1266 किलो कैलोरी रो एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट नवाक पड़िबो अब आमे जानि जंती 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आमे पढ़थिले ना 1 ग्राम केते दोची 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी दोची ठीक अछि डिवाइड बाय 4 करो डिवाइड बाय 4 इट विल अराउंड 317 ग्राम हमको 317 ग्राम रो कार्बोहाइड्रेट डेली कंज्यूम करिया पड़िबो ओके 317 ग्राम एटाला मेल पे फीमेल पे कोन सिमिलरली हम नेचंदी गोटे टी या टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट 700 कहथिले लेट नेला 1660 सिमिलरली 60% बाहर करो 900 996 किलो कैलोरी ताको डिवाइड करो बाय 4 इट विल गिव यू 249 ग्राम्स गोटे एवरेज मेल रो केते दरकार होतला 317 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आउ गोटे फीमेल एडल्ट रो केते दरकार एवरेज हला 250 ग्राम्स okay so this is the carbohydrate digestion and absorption हम एटा पछरे आसीबे फर्स्ट ऑफ ऑल we will complete other two things गोटेला प्रोटीन गोटेला तमरा फैट एई टॉपिक रे तमरा किछि किछि साइंटिफिक टर्म माने रहिबो एंड यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट जेतला हम डाइजेशन पढिबा किबा ओके डाइजेशन प्रोसेस हे गला मेटाबॉलिज्म हे गला सेतरे किछि किछि साइंटिफिक टर्म तमरा आसीबो एंड यू नीड टू रिमेंबर बहुत अधिक नै कम कम अछि 10 टा 15 टा लेखा वर्ड आसीबो ओके पर्टिकुलरली दे आर द नेम ऑफ एंजाइम्स आउ किछि एक्टिविटीज दैट यू नीड टू रिमेंबर ठीक अछि सेकंड थिंग हला कोन हमर प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स इन वेरियस प्रोपोर्शंस अमीनो एसिड चेन जेतल हबो ओके अमीनो एसिड चेन्स जेतल तयारी हबो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन रे दैट विल फॉर्म योर प्रोटीन्स अमीनो एसिड कोथि तयारी अमीनो एसिड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एतिबान तमर कोथि थिला एटा कार्बन से भी थिला एसो नो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोटीन रे दीटा स्पेशल जिंस अछि गोटला सल्फर गोटला नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन समान हला कार्बोहाइड्रेट रे जहा थिला एथरे भी समान अछि बट टू थिंग्स one is your sulfur one is your nitrogen that is added to form your amino acids सब बळे मन रखिबो प्रोटीन जेतला हम कहउचंदी प्रोटीन is made up of amino acids देखो गोटे बढ़िया इंटरेस्टिंग कथा कहउछ जेतला हम प्रोटीन इनटेक करचंदी
जेतला हमें प्रोटीन इनटेक करचंदी बॉडी ताकू फास्ट अमीनो एसिड कन्वर्ट करिवो तापरे से अमीनो एसिड को बॉडी यूज करिवो एगेन तादर प्रोटीन तैयारी करिकी बॉडी ताकू यूज करिवो माने आमे जो फॉर्म रे प्रोटीन खाउचंदी बॉडी से फॉर्म रे प्रोटीन को यूज करि परिवोनी बॉडी ताकू फास्ट भांगिवो ओके बॉडी ताकू ब्रोकन डाउन करिवो इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड को ब्रोकन डाउन कला परे ताकू अगेन से प्रोटीन ने कन्वर्ट करिवो प्रोटीन को कन्वर्ट करिके से यूज करिवो तो प्रोटीन आर हाँ से जो डेफिशिएंसी अछि ओके कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी दैट विल स्टडी इन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी गोटे अछि गोटे पीईएम अछि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोली गोटे चैप्टर अछि विल स्टडी दैट ठीक है मु जानि सुनि छाड़ी डेफिशिएंसी जोटा रहिला सेटा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हम कवर करिया देखो so there are almost 20 types of amino acids present in protein में 20 प्रकार अमीनो एसिड्स अछि अलग अलग प्रोपोर्शन ऑब्वियसली अछि 9 of them are termed as essential they have to supply through foods every day because से 9टा अमीनो एसिड ग्रुप्स जोटा हम बॉडी ताको किछि भी अमाउंट रे फॉर्म कर परिबन एग्जांपल लेरा हिस्टिडीन ओके एग्जांपल लेला हिस्टिडीन वालिन आउ ट्रिप्टोफैन हिस्टिडीन हिस्टिडीन वालिन आउ ट्रिप्टोफैन एटा हला तमरो एसेंशियल जोटा एसेंशियल अछि मन रखिबो जोटा तमरो एसेंशियल अछि ताको हम बॉडी से अमीनो एसिड को फॉर्म कर परिबोनी एंड वी नीड टू टेक इट फ्रॉम और वी नीड टू टेक इट इन द फॉर्म ऑफ फूड ओके हमको प्रतिदिन फूड हिसाब रे माने फूड रे ताको नबाकू पड़िबो नेक्स्ट ला 11 टाइप ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कोडियरु नॉन एसेंशियल केतरा अछि 11 टाइप्स as they can be synthesized in our body आमा बॉडी रे किछि किछि अमाउंट रो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस हे परिबो जदि हम ताको नॉन होचंदी देन इट इज ओके ठीक कोन कोन हला तारो एग्जांपल गोटेला अलानिन ओके अलानिन ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिन एटा को आम पाखर किछि अदर ऑप्शन नहीं the only option is we need to memorize the things by writing it down जेमिति अमीनो एसिड्स हम कहले एसेंशियल ले तीनटा कहले ओके नौटा अछि तीनटा इज एनफ हिस्टिडीन वालिन आउला ट्रिप्टोफैन तमे चार थर पांच थर ताको बही माने खाता बंद कर लिखिबो कोन रे जीव हिस्टिडीन वालिन ट्रिप्टोफैन आ जदि हम कथा होछु नॉन एसेंशियल अलानिन ग्लाइसिन आउला ग्लूटामाइन जे तुम तीनटा मन रहउची दीटा लिखले भी न एमती किछि कंपल्सरी नहीं कि तुमको सब गुडा आस्तो दीटा लिखले भी चलिबो अलानिन ग्लूटामाइन एटसेट्रा लिखि के पळे देबे नो इशू नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एटी देखो नॉर्मली इंडिया रे प्रोटीन सोर्स आउ यूएस वगैरह रो प्रोटीन सोर्स इज डिफरेंट आमर केमती कहउछन आमे कहउछन वेज नॉन वेज ठीक आमर एमती होछ ना क्लासिफिकेशन प्रोटीन क्लासिफिकेशन इन वेज वेजिटेबल रे एंड नॉन वेज लाइक योर मीट हे गला पोल्ट्री हे गला एग हे गला आ वेजिटेबल आमे कहउछन पल्सेस हे गला पीस हे गला ठीक रे सो इंटरनेशनल ले सेमती देखा जाय इंटरनेशनल देखा जाय द सोर्स तो एनी टाइप ऑफ सोर्स either it can be taken from plant or from animal दीटा ही सोर्स अछि ना हमें आइदर प्लांट रो नहीं परिबा किबा एनिमल को नहीं परिबा तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन रे एग्जांपल ले दिया है फर्स्ट इज मीट कौन कौन हे पारे मीट रे चिकन हे परिबो बीफ हे परिबो लैम हे परिबो पोर्क हे परिबो टर्की हे परिबो इट इज इंटरनेशनल ठीक अछि देन फिश टूना हे परिबो मैकेरेल हे परिबो साल्मन हे परिबो हमकु किछि किछि मन रखिया पड़िबो ए जो मैकेरेल हे गला साल्मन हे गला सेतरा हमरकु ओमेगा फैटी एसिड भी मिलुची सो किछि किछि अमाउंट रे हमकु ताको भी मन रखिया पड़िबो देन हे गला तमर कोन डेयरी मिल्क हे गला तमर स्किम्ड मिल्क हे गला
गोटे तुम शुणी ना हुए प्रोटीन बोली से हुए प्रोटीन टा कोड दैट इज टेकन फ्रॉम द मिल्क जितने आम मिल्क आउ मिल्क प्रोडक्ट पढ़ा तादेह आम देखिए अलग अलग टाइप प्रोटीन कौन कौन मिल्क प्रेजेंट अच्छी सो डेयरी प्रोडक्ट रे मन रखियो मिल्क होगा स्किम्ड मिल्क होगा चीज आउ योगर्ट दही एथिरे तुमको कौन मिलूची प्रोटीन मिलूची नेक्स्ट एग चिकन एग होगा डक एग होगा आउ सी फूड लाइक प्रॉन्स ओके क्रैब्स एते जिनस एते क्लासिफिकेशन न करिकी केवल प्लांट बेस्ड लिखिकी आदर 4टा कि 5टा एग्जांपल दे देले भी एनफ बिकॉज आमे पढुचंदी तो आमको टिके अधिक जिनस कहया पड़ियो सो दैट तमे ताकू भलरे मन रख परिबो सिमिलरली देखो प्लांट बेस्ड प्रोटीन कौन कौन आसियो cereals लाइक हेला व्हीट हेगला देन कॉर्न हेगला ओट्स हेगला राइस हेगला बार्ले ये सब गुडा तुमको प्रोटीन मिलिबो obviously the amount of protein that is we are taking from plant based is less plant based protein is comparatively of lesser quality than animal based protein animal based protein ne almost all type of amino acids that is required for our body is present but plant based protein ne se jinso absent hai next hela kono plant based legumes like your soy सोयाबीन जोटा आम कहते सोयाबीन रे बहुत अधिक अमाउंट रो प्रोटीन थाए मिल्क ठू भी अधिक देन पीस देन बीन्स चिकपी लेंटिल्स ठीक जिते जिनस अच्छी गोटे 2 जिनस मन रखियो देन ऑयल सीड लाइक सनफ्लावर ठीक कॉटन सीड पंपकिन सीड नट्स कौन कौन नट्स हो पारिबो आलमंड हो पारिबो कैश्यू नट हो पारिबो वालनट हो पारिबो पीनट हो पारिबो एडिबल ऑयल चिया सीड जहाँ भी अच्छी मन रखियो आउ ट्यूबर्स लाइक पोटाटो आदर भी किसी अमाउंट रो हमको प्रोटीन मिले बट आमे एटा का तो आमे एग्जांपल में कहले बट जेतला आमे एग्जाम रे लिखिबा जदि सेठी पचाथिबो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन वी नीड टू क्लासिफाई इट इन डिफरेंट फॉर्म कौन कौन क्लासिफाई आमे करबा क्लासिफिकेशन ने आमे लिखिबा फर्स्ट इज कंप्लीट प्रोटीन पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन इनकम्प्लीट प्रोटीन ठीक अछि तीनटा प्रकार हम प्रोटीन लिखिबा देखो कौन फास्ट कहला कौन कंप्लीट प्रोटीन इज known as your first class protein it is also known as your first class protein good proportion of essential amino acids amaro amino acids jaha jaha darkar thibo almost all type of amino acids are present in complete protein promote normal growth rate and maintain the body ro maintenance pai au growth pai jaha darkar that is provided by the complete protein एग्जांपल है मिल्क फिश आउ एग मिल्क को तुम आम कहते कंप्लीट फूड बोली भी मन रखियो मिल्क है तुम कंप्लीट फूड कहीं मिल्क रे बहुत सारा विटामिन्स बहुत सारा मिनरल्स आउ इवन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी अच्छी एक्सेप्ट विटामिन सी ओके इन मिल्क आउ एग रे सब जिन तुम मिल जाव एक्सेप्ट विटामिन सी तो मिल्क को आम कहते कंप्लीट फूड तो कंप्लीट प्रोटीन एग्जांपल है तुम मिल्क होगा गोटे फिश होगा आउ एग होगा नेक्स्ट इज पार्शियली कंप्लीट कौन हम इट लैक्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सम अमीनो एसिड्स जो 9टा अमीनो एसिड्स अच्छी जोटा को आम क्लासिफाई करी कहले कि इट इज द एसेंशियल अमीनो एसिड्स सम अमीनो एसिड्स आर लैक से किसी अमाउंट रो अमीनो एसिड लैक करन दिस प्रोटीन्स कैन मेंटेन लाइफ आपको खाइले लाइफ मेंटेन हो पारिबो बट कंप्लीट जमी ग्रोथ मेंटेन होता है पारिबोनी एग्जांपल कौन है दाल और पल्सेस एंड पल्सेस आउ सीरियल्स नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कौन कहूँ कंप्लीटली लैक ऑफ वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड्स से 9टा एसेंशियल अमीनो एसिड्स रु गोटे 2टा 3टा 4टा किसी मिसिंग हो पारे एंड कैन नॉट इवन मेंटेन लाइफ ताकू खाई की आमे लाइफ को सस्टेन कर परिबानी बिकॉज तादरे बहुत सारा अमीनो एसिड्स आर लैक एग्जांपल है जेलाटिन एंड जेइन ऑफ कॉर्न ZEIN
जेइन ऑफ कॉर्न आवेला जेलाटिन एथिरे तमरो कोन होची मोर देन वन अमीनो एसिड्स आर लैक ए तीनटा को आमे क्लासिफिकेशन कले कंप्लीट पार्शियली कंप्लीट आवेला इनकम्प्लीट नेक्स्ट आमे जिबा द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन जेमिति मु एठी लिखी छी यू कैन आल्सो यूज दिस डायग्राम इन एग्जाम रे एमती डायग्राम करिके वो आल्सो मु टिके बड़ लिखी छी तो आउटे छोट छोट कर लिखिबो माने छोट माने नॉट द साइज छोट माने पॉइंट छोट कर दबो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज इट इज act as a building block of our body रो बिल्डिंग ब्लॉक हिसाब रे काम करे जो टिश्यू रिपेयर हो गला कि बॉडी रे कोई डैमेज हो गला सेठी प्रोटीन पहुंच की और अमीनो एसिड जाएंगी सेटा को रिपेयर करिवो सप्लाई अमीनो एसिड टू द सेल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स आमे जानि जंदी इन 120 डेज आम बॉडी कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए 120 डेज आम ब्लड भी रिप्लेस हो जाए आम टोटल सेल जति अच्छी सेल भी चेंज हो जाए तो आज का डेट रे आमे जहाँ देखुं 120 डेज पर आम देखले आमर सेल चेंज हो जाइथिबो जेतेबेले सेल आमर एबे कोन होची सेल नुआ तयारी होची नुआ नुआ सेल तयारी होची तो डेड सेल गुडा रिप्लेस होचन तो जना पड़नी कि बॉडी मेंटेन हो चलची बट जेतेबेले एजिंग होबो सेतेबेले कोन होबो सेल रो प्रोडक्शन टा कमी दिबो आउ डेड सेल जोड़ा अच्छी से माने बहुत टाइम देके सस्टेन करी हेठी रहिबे तो सेठी ही प्रॉब्लम आसे जेतेबेले माने एज हो जाए सेतेबेले डेड सेल जोड़ा रही कि रिंकल वगैरह स्टार्ट कर दियन तो रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल इज डन बाय प्रोटीन प्रोटीन फॉर्म्स हीमोग्लोबिन विथ आयरन प्रोटीन और आयरन मिसिकी से माने हीमोग्लोबिन फॉर्म करती हीमोग्लोबिन कौन द रेड सेल दैट इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग और ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आमे जो ऑक्सीजन आमे इनहेल करूचंती लंग्स रेटा रिप्लेसमेंट होची ना ब्रोंकोली रे जाईकी तो सेठी कोन होची ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भितर एक्सचेंज होची ब्लड रे जो हीमोग्लोबिन थिबो दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट और फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सेटा को के करिवो ए हीमोग्लोबिन को के फॉर्म करिवो इट विल बी फॉर्म बाय प्रोटीन विथ द हेल्प ऑफ आयरन प्लाज्मा प्रोटीन लाइक ग्लोबुलिन albumin regulates osmic pressure and water balance आम बॉडी रे osmic pressure माने आम बॉडी रे गोटे पर्टिकुलर प्रेशर गोटे मेंटेन होवा दरकार ठीक ऑस्मोलिक प्रेशर जोटा हम कहते गोटे बॉडी रे पर्टिकुलर अमाउंट रो प्रेशर होवा दरकार कि मो वाटर बैलेंस हमरो ठीक रहया दरकार जेतले हम वाटर बैलेंस कम हे जो डिहाइड्रेशन हे जाउची वाटर बैलेंस जेतले कम होबो डिहाइड्रेशन कुछ ना हम कहना दी कि डिहाइड्रेशन हला WHO रिकमेंडेड ओआरएस पियो सॉल्ट वगैरह नियो नेले कोन हो सेटा हाइड्रेट हे जिवो तो ये वाटर बैलेंस को आ ऑस्मोलिक प्रेशर को जो मेंटेनेंस होची दैट इज आल्सो डन बाय द प्रोटीन एटा भी प्रोटीन नो फंक्शन इट हेल्प्स इन एंजाइम सिंथेसिस ऑफ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दीटा हमर एंजाइम कहला गोटेला पेप्सिन स्टोमक रे जोटा अछि एंड ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन ए पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो एंजाइम अछि दैट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोटीन एंजाइम रो कोन काम एंजाइम रो काम होला सेरा फास्ट ला हम बॉडी रो जहां भी एक्टिविटीज अछि ताकु से फास्टर करियो आउ मेटाबॉलिज्म रे डाइजेशन रे इवन सेक्सुअल मैच्योरिटी रे ए सबुत रे एंजाइम रो काम अछि हम बॉडी रे एंजाइम बहुत सारे जिंस करछ तो से एंजाइम को प्रोडक्शन करिया पई किमा से एंजाइम को सिंथेसिस करिया पई वी नीड adequate amount of protein then hormones like insulin thyroxine it is also formed by the action of protein insulin and thyroxine is also formed by the action of protein breakdown to provide energy जेतला हमें कहले कि बॉडी रे हमरो कार्बोहाइड्रेट रो कमी हे जिवो सेतले प्रोटीन विल बी ब्रेक डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी केते आसीबो गोटे ग्राम प्रोटीन रे तुम मिलियो 5.56 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट केते मिलतरा 1 ग्राम इक्वल टू 4 किलो कैलोरी एतिर केते मिलछ हमको 5.56 ठीक अधिक मिलछ ऑब्वियसली बिकॉज़ आमे देखले कार्बोहाइड्रेट रे कोन थिला तमरो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एतिर कोन अछि आउरी सल्फर नाइट्रोजन
मन रखियो सब जिंस 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जेतले ब्रोकन डाउन होबो इट विल प्रोवाइड 5.56 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी व्हाट आर द सोर्सेस हमें 8 तो देखले बहुत सारे सोर्सेस देखले ठीक ए बहुत सारे सोर्सेस देखले मन रखियो आदरू व्हाट आर द सोर्सेस फर्स्ट ला तमर मिल्क एग पल्सेस फिश मीट देखो सबू जगह रे तुम एग आ मिल्क लिखि परिबो एक्सेप्ट विटामिन सी यदि आमे अलगा बहुत सारा जगह भी हम देखिबा कोन हे परिबो तो मैक्सिमम जगह रे एग आ मिल्क हम मेंशन कर परिबा तो एग रे आ मिल्क रे तापर रहला तमर पल्सेस रहला जो तमर कोन मिलची दैट इज पल्सेस फ्रॉम व्हिच वी आर गेटिंग प्रोटीन पल्सेस हे गला फिश हे गला मीट हे गला देन पल्सेस को हम कोन कोंदी इट इज नोन एज योर पोर मैन्स मीट मीट रे हमको कंप्लीट प्रोटीन मिलुची ठीक अछि मीट रे हमको कंप्लीट प्रोटीन मिलुची माने सबु अमीनो एसिड थाए ऑलमोस्ट ऑल अमीनो एसिड्स एसेंशियल एक्चुअली एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द मीट बट पल्सेस से सबु न थाए बट लाइफ को सस्टेन करि पारे एंड इट आल्सो प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो सेति में पल्सेस को कह जाय पोर मैन्स मीट म्यूचुअल सप्लाई ऑफ सीरियल एंड पल्सेस रेक्टिफाई द लिमिटेशन मिछे जदी खाइबो आदर किछि अछि तादर किछि प्रोटीन अछि मिसले दे कैन मैनेज no protein doesn't give 4 kilo calorie protein 5.56 kilo calorie protein 5.56 kilo calorie of energy provide करे just 1 minute 4 किलो कैलोरी हला मु कहल ना कार्बोहाइड्रेट ठीक अछि कार्बोहाइड्रेट मु जस्ट कंपैरिजन करथली कार्बोहाइड्रेट तमर आसीयो 4 किलो कैलोरी प्रोटीन आसीयो 5.6 किलो कैलोरी ठीक अछि जिबा को नेक्स्ट देखो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एटा भी हमें देखिबा आज पर द रिकमेंडेशन ऑफ आईसीएमआर गोटे फॉर्मूला तो मन रखिबो अप्रोक्सीमेटली 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट यदि जनकर वेट अछि 100 केजी एग्जांपल लउची ताल ताकू 80 ग्राम रो प्रोटीन दरकार डेली जार 50 केजी रो वेट अछि ताकू 40 ग्राम दरकार सिमिलरली अलग अलग वेट रे अलग अलग हबो बट इट इज ए जनरल अप्रोक्सीमेशन हमको लिखिया पड़ियो एग्जैक्ट यदि हमको मन पड़ुनी ताले हमें अप्रोक्सीमेशन करी पळे आसले चलिबो बट हमको सब बेले आईसीएमआर रिकमेंडेशन लिखिया पड़ियो कोन हला इन्फेंट हला केबे 0 रु नै कि 1 ईयर गोटे बेबी जेतला जन्म होची 0 रु 1 ईयर ता कोंदी इन्फेंट 1 रु 5 ता कोंदी चिल्ड्रन तो 0 रु नै कि 1 ईयर पर्यंत द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज 9.1 ग्राम और तुम 9 ग्राम भी लिख परियो एग्जैक्ट लिखिबा दरकार नहीं 9.1 ग्राम और 9 ग्राम इज इनफ 1 रु नै कि 5 ईयर पर्यंत केते 16.7 ग्राम 16.7 ग्राम इन्फेंट हे गला तापर हे गला चिल्ड्रन हे गला तापर एडोलसेंट माने 10 रु नै कि 18 पर्यंत तो तांको रिक्वायरमेंट केते 32 रु नै कि 46 ग्राम डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी ठीक अछि बॉडी रे केते मसल्स वगैरह दरकार 32 रु नै कि 46 ग्राम ऑफ एनर्जी और प्रोटीन इज रिक्वायर्ड adult केते दरकार 46 रु नै कि 58 इन्फेंट रो मन रखियो 9 चिल्ड्रन रो जस्ट डबल कर दबो 18 होची तो 17 लिखियो एडोलसेंट तार डबल 32 रु 46 adult 46 रु 58 प्रेग्नेंट वुमेन हला 63 ग्राम आ सबुट अधिक हला लैक्टेटिक माने जेतल तांगर बेबी जन्म होई सरची एंड बेबी इज फीड ऑन द मिल्क ब्रेस्ट मिल्क जेतल पिउची सेतले तांगर अधिक प्रोटीन दरकार दैट इज 68 टू 75 ग्राम इन्फेंट 9 चिल्ड्रन जस्ट डबल कर दबो 18 होची ना
तो 17 पाखापाखि लिखियो एडोलसेंट तार डबल 32 रु नेकी 46 एडल्ट 46 रु नेकी 58 प्रेग्नेंट वुमेन 58 प्लस 5 करिवो 63 आउ लैक्टेटिंग हला 68 रु 65 जस्ट प्रैक्टिस कले एटा तमरो मन रही जीवो कॉपीज नब कॉपी रे ए जिंस सब लिखिवो जो शॉर्ट नोट बनेबो आदरे भी ए जिंस को सब मेंशन करिवो ओके so now we'll study the last thing that is your protein energy malnutrition तापर हम लिपिड को जिबा आगे हमें पढ़िया प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन तुम जोटा कहउथलो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन जेतो दीटा जिंस डेफिशिएंट हबो ताको हम कोन कोंदी ताको हम कोंदी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन और पीईएम एंड पीईएम इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटा सबुठ बड़ चैलेंज टू मैनेज प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स गोटेला कौन सीवियर लाइक क्वासियरकर और मारास्मस आ गोटेला माइल्डर माने अच्छी बट स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट अच्छी दैट इज इट रिटार्ड द ग्रोथ जति की बेबी रो ग्रोथ होबा कथा चिल्ड्रन जति ग्रोथ होबा कथा सेति के अमाउंट रो ग्रोथ हे परिबोनी ग्रोथ रिटार्ड हे जिवो माने स्पीड ऑफ ग्रोथ विल बी रिड्यूस्ड सेटा कोन माइल्डर फॉर्म ऑफ पीईएम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन आ सीवियर फॉर्म ले कोन होबो क्वासियरकर होबो मारास्मस होबो एंड थर्ड टाइप इज ए दिटार कॉम्बिनेशन दैट इज क्वासियरकर मारास्मस मिसिक भी थर्ड टाइप हे परिबो सो द पीईएम और प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इज टू ड्यू टू द फूड गैप बिटवीन इनटेक एंड रिक्वायरमेंट आमे देखिले बॉडी रो केते रिक्वायरमेंट अछि प्रोटीन आमे देखिले कार्बोहाइड्रेट देखिले बॉडी रो केते रिक्वायरमेंट अछि एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट फूड जोटा हला प्रोटीन हे गला किंबा कार्बोहाइड्रेट हला केते आमे ताकू प्रोवाइड करचंती दीटा भीतर गैप रहिबो से जो गैप रहिबो सेइथरु पीईएम डेवलप हुए थ्री क्लिनिकल फॉर्म्स ऑफ एक्यूट प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कौन कौन प्रथम हला क्वासियरकर सेकंड हला मारास्मस थर्ड हला मारास्मिक क्वासियरकर दीटा मिसिबो तळे मारास्मस और क्वासियरकर जल मिसी की सीवियरली प्रेजेंट थिबे दैट विल लीड टू मारास्मिक क्वासियरकर तो क्वासियरकर केबे हुए चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 इयर एक रु नेकी 3 वर्ष पर्यंत पिला को हुए चिल्ड्रन हैविंग डाइट दैट इनसफिशिएंट इन प्रोटीन एंड एनर्जी पिला मानन को बहुत कम अमाउंट रो फूड दरकार थाए ठीक अछि बट सही स्मॉल अमाउंट रो फूड रे तुमको प्रोटीन दबा को पड़िबो कार्बोहाइड्रेट दबा को पड़िबो फैट दबा को पड़िबो विटामिन्स मिनरल्स सब किछि इंक्लूड करिया को पड़िबो बट किछि किछि जगह रे ड्यू टू poverty they were not able to provide sufficient amount of food ना तो ସେମାନେ कार्बोहाइड्रेट दे परतंदी ना तो ସେମାନେ प्रोटीन दे परतंदी आ किछि किछि जगह रे जेहेतु तांकर इनकम कम अछि दे कैन प्रोवाइड फूड बट इट इज नॉट एडेक्वेट इन एवरी एस्पेक्ट सेतिर प्रोटीन नथियो केवल कार्बोहाइड्रेट थिबो सो एमिति माने चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 इयर जोथरे डाइट रो डेफिशिएंसी होबो that will lead to protein energy malnutrition symptoms कोन लो बॉडी वेट जति होबा कथा लेट सपोज से पिला को 3 वर्ष 3 इयर तो 3 इयर जति की तार बॉडी वेट होबा कथा 8 kg 9 kg व्हाटएवर तार वेट ताटू बहुत कम थिबो मसल वेस्टिंग बॉडी रे मसल ही प्रेजेंट नथिबो तुमको देखले लागु गोटे कंकाल छिडा आइछि कंकाल ऊपर गोटे माने गोटे लेयर रो कोन लागिछि कंकाल ऊपर गोटे लेयर रो खाली चमड़ा थुआ आइछि बट भीतर मसल से नाही देन ओडेमा माने फुली जीवो तुम पाद फुल जीवो मुंह फुल जीवो पफीनेस आसियो फेस रे गोड रे ओडेमा आसियो फेस लुक्स पफी विथ सैगिंग चीक्स एंड सैलोन आईलिड्स हे जीवो सैगिंग चीक हबो मेंटल चेंजेस लाइक एपाथी इरिटेबिलिटी ताको किछि भी काम करिया को इच्छा हबनी से पिला को जहा कहले से इरिटेट करियो सब काम रे एपाथी माने किछि ताको फरक ही पड़नी कोन होची कोन नाही स्केली पिगमेंटेशन ऑफ स्किन रे जो पिगमेंटेशन होचे स्केल बलिया माने काती बलिया भारिया को स्टार्ट हे जीवो हेयर बिकम्स थिन ड्राई एंड ब्राउनिश और रेडिश पतला हे जीवो ड्राई हे जीवो ब्राउन कलर चेंज हे जीवो ब्लैक रू एनेक्सिया और एनोरेक्सिया इज कॉमन एंड डायरिया माने सीवियर
डायरिया आसीबो कि माने अनचेक्ड स्टूल तार स्टार्ट हो. सेकंड इज मारास्मस. मारास्मस कोन मोर प्रिविलेंट देन क्वासियरकर. क्वासियरकर जति पिला होची ताटू अधिक पिला मारास्मस होची. इट इज मोर प्रिविलेंट. Commonly up to 3 years and half a year children, but more common during first year of life. 0 to 1 year पर्यंत मोस्टली पिलांकु मारास्मस हुए. इट इज ए फॉर्म ऑफ स्टार्वेशन. माने एटी फूड रो ही कमी अछि. इट इज नॉट कि adequate amount of different proportion of food. एटा फूड रो ही कमी अछि. ना तो कार्बोहाइड्रेट अछि, ना तो प्रोटीन अछि, किछि नै. The children does not get adequate supply of breast milk or any alternate food. देखो normally कौन हुए in African countries जोटी एजुकेशन कम अच्छी तो तांकर कौन हम 2025 गोटे पिला है 2026 एंड बेलू आ गोटे पिला हम तो गोटे पिला जो 2025 होता आ गोटे पिला 2026 है जस्ट 1 year होती 1 year भर जो सेकेंड चाइल्ड आसो तो सेकेंड चाइल्ड विल फीड ऑन ब्रेस्ट मिल्क. सेकेंड चाइल्ड को ब्रेस्ट मिल्क मिलला जदि सेकेंड चाइल्ड को ब्रेस्ट मिल्क मिलला फर्स्ट चाइल्ड को ब्रेस्ट मिल्क मिलबनी जदि भी मिल आडेक्वेट क्वांटिटी हेनी तापर फूड रो कमी अच्छी तो ये सब लीड करिवो टू द मारास्मस. ये सब गुडा माने इट विल लीड टू द कंडीशन ऑफ मारास्मस. एटा को सेकंड चाइल्ड डिजीज भी कहते के जगह. सिम्पटम्स कौन हम फर्स्ट सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन. तार हाइट तार वेट तार मसल तार मोटर जो रेट रे ग्रोथ करिया कथा से रेट रे ग्रोथ करि परिबोनी. सीवियरली इट विल रिटार्ड द ग्रोथ. सीवियर मसल वेस्टिंग. मसल वेस्टिंग एमती हम ता बॉडी रे मसल मिलिया ही कष्ट हो. चाइल्ड लुक्स अपीलिंगली थिंग बहुत पतला हो. लिम्स अपीयर ऑन स्किन एंड बोन्स. केवल केमी थी जमी बोन आउ स्किन अच्छी भीतर किसी ना. रिंकल्ड स्किन स्किन तुम भांग पड़िया स्टार्ट हो. रिंकल्ड बोनी प्रोमिन्स बोनी माने केवल हाड़ हाड़ देखा. फ्रिक्वेंट वाटरी डायरिया एंड एसिड स्टूल्स. नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन. ये सब सिम्पटम्स. ओडेमा जमी मुझे कहली गोड़ फुली कि मुह फुली फैटी इनफिल्ट्रेशन ऑफ और फैटी इनफिल्ट्रेशन आर इनफ्रिक्वेंट. इरिटेबिलिटी एंड आपाथी ऑलमोस्ट सिमिलर जो सिम्पटम्स गुड़ा आसो बिकज ऑलमोस्ट सही टाइम रे ये जिन हो. देन लास्ट इज मारास्मिक क्वासियरकर. मिक्स्ड फॉर्म ऑफ बोथ क्वासियरकर मारास्मिक. मारास्मस थिला 0 ରୁ ନେଇକି 1 year पर्यंत तापरे 2 year तक स्टार्ट हेला क्वासियरकर तो दिटांग मिसले हेला मारास्मिक क्वासियरकर. कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ओडेमा वेस्टिंग and very severe condition and are classified as form of severe acute malnutrition. देखो malnutrition रो टॉपिक आमे पढिबा तळे malnutrition टॉपिक बहुत सारा इंस्टीट्यूशन मु काली कहथिला पढिबा आमे NIN पढिबा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ malnutrition यूनिसेफ आमे पढिबा WHO रो रोल आमे पढिबा NIMB आमे पढिबा FTRI पढिबा CFTRI पढिबा. तो एते सब जिंस गवर्नमेंट काहे करछि बिकॉज जते सब malnutrient बेबीज अछंती वर्ल्ड रे तार 1/3 malnutrient baby are present in India because of large number of population. आम पाखरे एते अधिक पॉपुलेशन अछि वर्ल्ड रो जते malnutrient baby अछंती तार 1/3 केवल इंडिया पाखरे अछंती. जेतले एते लार्ज नंबर ऑफ बेबीज आर प्रेजेंट इन इंडिया व्हिच आर malnutrient तो इंडिया को सेति में डिफरेंट स्टेप्स नबागु पड़छि. and for exam point of view it is becomes very important. Malnutrient as a topic PEM ये सब from the exam point of view it is very important. Okay, so we'll stop here today. Next class रे we'll start from lipid. आउ 2 दिन 3 दिन लागियो पिला मानकु आसिया पई because they have requested कि रजो चलची. They will join after the रजो but we can't stop the class as well. So आमे किछि दिन आउ 2 to 3 days we will start or we will study 1 hour or 1.5 hour daily. और जो 16 तारीख 17 तारीख हम विल अगेन रिज्यूम टू आवर 3 और 2.5 आवर 3 आवर क्लासेस हम करिया. एंड आवर एम इज बाय जुलाई 2025 भितर आमे सिलेबस को कंप्लीट कवर करिया सो दैट यू विल हैव एनफ टाइम टू रिवाइज एंड राइट मॉक. तमर एग्जाम अछि केबे सितंबर लास्ट रे ऑलमोस्ट तो सितंबर पर्यंत आमे जे जुलाई सार देबा सो यू विल हैव 2 hours or 2 months of time to practice and revise.
ओके ऑलरेडी मुझे जो नोट्स देथिला समान नोट्स अछि ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विथ यू द नोट्स से नोट्स हम पढौची एट लास्ट पेज को तुम पळेबो ठीक अछि लास्ट पेज ए जो नोट्स गुडा अछि से लास्ट पेज रे अछि जाई गोटे तुम 60 64 पेजेस आछिबो तापर अगेन 1 2 स्टार्ट हबो सेही जो 1 2 स्टार्ट हबो सेही रेटा अछि सो आगे जे क्वेश्चन पचारे चाहिबो हमन डू यू हैव एनी डाउट और विल stop it here okay देखिए डाउट थो you can always message me ठीक this is my number I'm giving you 7989778247 a number you can message me okay thanks for watching the lecture have a great day